So class 10th students, you are in last lesson of geography, lifelines of national economy. In fact, you have already studied this lesson. Today, we are going to revise. We are going to do some more question answers and just a thorough revision of this lesson. Okay. So firstly, what do you mean by lifelines of national economy? What do you mean by lifelines of national economy? All the means of transport and communication are known as lifelines of the national economy. What will you write? Repeat. All the Lifeline lifelines means? and transport, all the lifelines and transport of the economy is known as national economy. Listen once again. All the means of transport and communications are known as lifelines of the national economy, because the national economy can't be able to do anything. National economy will be unable to do anything if there is no lifelines, if there is no means of transport and communication. So your answer is all the means of transport and communications are known as the lifelines of national economy. Now, next point. What is the importance of lifelines in national economy? How lifelines are important in the national economy? Have you written this answer in the previous class? Suppose you get a question in the exam that what are the importance of lifelines, or what are the importance of transport and communications in the national economy? Then what will you write? Point number 1. Lifelines are very important. Do you want to write? Some of you? Then I will dictate. So write the question. What is the importance of lifelines in the national economy? Start writing. Lifelines are very important. Lifelines are very important for the economic development of a nation. Ma'am, repeat once again. Lifelines. Lifelines, that means transport and communication are very important. Are you saying something, Hare Ram? Yes, ma'am. For how is sometimes my phone will not supports my homework. Today That's why internet I'm is so late. disturbed. I'm also feeling that internet is disturbed today. I will repeat, you don't mind. And you open your copy also. I think you must have written in the previous class. Must have Yes, written ma'am. this answer in the previous class. The rest of you write, the means of transport and communications are very important for the economic development of a nation because. Ma'am, what? Ma'am, repeat the question. What are the importance of lifelines in the national economy? What are the importance of lifelines in the national economy? Start writing the answer. The means Ma'am, of. in previous classes, I written the answer of that Okay. question. Okay, that's I am saying that some of you have written this answer already, and today again you are going to write this, especially those students who have not written this answer. Means of transport and communications are very important for the economic development of a nation
because point number 1, it is very essential for the movement of goods and people from one place to another. Firstly, I am telling you the points, and Hariram, in the Ma'am, repeat once next time again. you will repeat your answer. What have you written in your answer? Okay. Okay, ma'am. So, in the right first point is it is very essential, or they are very essential for the movement of goods and services. Goods, GOODS, goods and people. या goods and services भी लिख सकते हो. Goods and services and people from one place to another. Point number 2. Repeat the first point. The student who is writing just now. It is very essential for movement of goods and people from one place to another place. हाँ, ठीक है. चलिए, very good. अब दूसरा point लिखो. It is very essential for the development of agriculture and industries. Again, it is very important for the development of agriculture and industries. Ma'am, repeat once again. Again, it is very important for the development of agriculture and industries. As उसी में लिखना, हाँ, as we have to transport the produced goods to the market, as we have to transport the produced goods to the market and the raw materials to the factories, and the raw materials to the factories. Repeat back. Again, these are very essential for the development of agriculture and industries, as we have to send the produced goods to the market, as we have to send the produced goods to the market and the raw materials to the industries, etc. बहुत तरह के काम होते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड. And the raw material to the industries. Harsh Kumar, repeat the second point. Yes, ma'am. Again, it is very important for the development of agriculture and industries, as we have to transport the produced goods to the market and the raw materials to the industries. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखिए. All the means of communications are used for third point. All the means of communications are used for exchanging our knowledge, ideas, news, views, etc. News. Views, VIEWS, news, views, etc. Next point, point number 4.
export and import are totally dependent. Export and import are totally dependent on the means of transport and communications. Exports and imports are totally dependent on the means of transport and communications. Amrit Gautam, are you writing or have you written previously? Yes, ma'am. लिख रहे हो अभी कि पहले से लिखा हुआ है? Yes, ma'am. अच्छा, अभी लिख रहे हो? मैम दोनों लिख रहे हैं, अच्छा, पहले ठीक है। वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, फिर दोनों मिला के अपना पॉइंट सब सेम ही है, थोड़ा सेंटेंस बदल सकता है ना? Yes, ma'am. I will repeat the previously asked. Previous answer. Hare Ram, you will repeat the previous answer. Okay. So write the fifth point. First, you write the fifth point. Means of transport and communications. Means of transport and communications develop our national integration and international understanding. Means of transport and communications develop our national integration and international understanding. Amrit Gautam, read the last point, fifth point. Means of transport and communication develop our national integration and international understanding. Very good. International understanding. National integration means राष्ट्रीय एकता, है ना? देश के अंदर एक यूनिटी लाता है कि नहीं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है तभी ना सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो देश के अंदर एक एकता लाता है, इसको कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। और पूरी दुनिया के बीच में हर एक देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करता है। ठीक है मैम? हाँ हरे राम, अब तुम अपना आंसर पढ़ो तो पहले वाला। Okay, ma'am. First one, railways are providing multifarious activities. First, it is very important for commercial purpose. It provides facilities of business, sightseeing, etc. नहीं तुम तो रेलवे Railways का पढ़ने transport लगे, सुनो passengers. एक मिनट ये तो इम्पोर्टेंट। अरे राम, wait here just a minute, है ना? You are reading about the importance of railway and our question is what are the importance of means of transport and communication? This is general question overall about the means of transport and communication. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो जनरल है, ये सिर्फ रेलवे का नहीं है ना? तुम तो रेलवे वाला पढ़ रहे हो, तो देखो तो फर्स्ट पेज में तुम्हारा लिखा है ये आंसर। संगमित्रा, हैव यू रिटन? Yes, ma'am. तो पढ़ो तो आंसर, पहले वाला है तो वो पढ़ो, नहीं तो अभी वाला पढ़ो। What is the importance? Yes, ma'am. What is the importance of lifelines in national economy? Lifelines are very important for the economic development. Means of transport and communication are very important. First, it is very essential for the movement of goods, services, and people from one place to another. Second, against it is very essential for the development of agriculture and industry, as we have to transport the produced goods to the market and the raw material to the factories, etc. Third, all the means of communication are used for exchanging our knowledge, ideas, news, views, etc. Fourth, export and import
are totally dependent in the means of transport and communications. On the Fifth, means of transport and communications develop our national integration and international understanding. ठीक है, तो ये सारी बातें लगभग हम लोग इकट्ठा कर लिए, है ना? तो और कोई आंसर पढ़ना चाहता है? अगर पहले वाला आंसर है तो वो भी पढ़ सकते हो। दीक्षा? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। मैम। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। कि अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैम अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो उसको 4 ही पॉइंट्स लिखेंगे या 5 पॉइंट्स लिखेंगे? देखो 4 पॉइंट में भी मार्किंग होगा ही, लेकिन अगर तुम्हारे पास 5 पॉइंट है तो तुम लिख दो 5 पॉइंट्स, है ना? yes, और पॉइंट्स लिखने का तरीका एक ये भी होता है कि हमारे पास अगर ज्यादा नॉलेज है तो हम दो चीज को एक में मर्ज करके भी लिख देते हैं। yes, ठीक है ना? तो तुम्हारे पास जितना मैंने पॉइंट है ना उसको मैक्सिमम उसमें लिखना चाहिए, भले ही पॉइंट का नंबर कम कर लो, क्योंकि पॉइंट का नंबर ज्यादा नहीं काउंट किया जाता है, देखा जाता है कि उसमें मटेरियल क्या है। ठीक है ना? चलो तब हम लोग आगे बढ़े। यस मैम। हाँ, तब अब आ जाओ यहाँ पे क्लासिफिकेशन पे। और एक यहाँ इस तरह का लाइन देखो, ये जैसा है ना कि द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, है ना? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ है कि पूरी दुनिया एक बड़े विलेज में कन्वर्ट हो गई है। मतलब एक विलेज के अंदर आना जाना जितना आसान है उतना ही अब क्या आसान है, पूरी दुनिया को कांटेक्ट में रखना और कहीं से कहीं आना जाना बिल्कुल उतना ही आसान है ना? तो यहाँ अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो इसमें भी फिर वही इंपॉर्टेंस ही लिखेंगे कि लाइफ लाइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। और यहाँ शुरू में वही सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ देखो, गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स, है ना? जहां से सप्लाई करना है, जहां पे डिमांड है, गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप नहीं मूव करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए। The movement of these goods and services from their supply locations to demand locations necessitates the need for transport. Some people are engaged in facilitating these movements. These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportation. Thus, the pace of development of a country depends on upon production of goods and services. ठीक है ना? तो transportation, trade and commerce also depends on transportation. This point you have already written in the form of export and import, है ना? तो कंट्री के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स हो या पूरी दुनिया के लेवल पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो सब किस बात पे डिपेंड करता है? तो ट्रेड, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इंपॉर्टेंस में तुमने लगभग सारा पॉइंट लिख लिया है। अब आ जाओ यहाँ पे क्लासिफिकेशन। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को पहले ब्रॉडली 3 कैटेगरी में कर लिए, लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है ना? लैंड पे कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर में किस किस तरह का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, और एयर में क्या है। ठीक है? तो लैंड पे यहाँ तुम्हारा 3 टाइप्स लिखा हुआ है। एक हो गया रोडवेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवेज आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड देन पाइपलाइंस। ठीक है ना? पाइपलाइन भी हम लैंड पे ही बिछाते हैं, तो ये पाइपलाइन भी उतना इंपॉर्टेंट हो गया। रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन विच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड। ठीक है? रोडवेज तो सब समझ रहे हो, रेलवेज और पाइपलाइन भी समझ रहे हो कि पाइपलाइन के थ्रू हम लिक्विड और गैस का सप्लाई करते हैं। जैसे पेट्रोलियम का सप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल गैस का सप्लाई करते हैं, वाटर का सप्लाई करते हैं, या मिनरल भी स्लरी के फॉर्म में हम सप्लाई कर सकते हैं, है ना? मिनरल्स को जब सेमी लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं तो उसको स्लरी कहते हैं। ठीक है ना? फिर आगे देखो, वाटर एग्जांपल है। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। मैम हाँ, इसका कोई एग्जांपल? हाँ है।
इंडिया में ये ना आयरन ओर जो है, तुम लोग मिनरल वाला लेसन अगर पढ़े होगे तो आयरन ओर का जो माइंस है ना, जैसे कर्नाटका के में जो माइंस है, कुद्रेमुख माइंस है, या फिर गोवा के पास जो गोवा महाराष्ट्र बेल्ट का आयरन ओर माइंस है, तो ये सब में से ना आयरन ओर को पहले सेमी लिक्विड बना लिया जाता है और पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और पाइपलाइन के लिए एक और भी बातें जान लो, एक और भी बात, कि पाइपलाइन जो है ना वो सी के अंदर भी बिछाया गया है, लैंड पर ही नहीं है, ये सी के अंदर भी है। मैम इन मुंबई हाई लाइक प्लेसेस, हाँ हाँ, मुंबई है। रिफाइनरी, हाँ, वहां से क्रूड ऑयल निकालते हैं तो पाइपलाइन के थ्रू कोस्ट पे पहुंचा देते हैं, है ना। और ट्रम्बे जैसे जगह में उसका रिफाइनरी सेंटर है। कच्चा तेल को क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल, है ना। और जब उसकी रिफाइनरी हो जाती है, रिफाइनिंग, तो पेट्रोल, डीजल और तरह तरह के अदर प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं।